She has been associated with the Brahma Kumaris for more than 4 decades now, has been doing a lot of honorable works, and her smile says it all that, how stress-free she is in her life, and we would definitely want to know the secret of the same. Huge round of applause for sister. And over to you, Mr. Vats, for taking the conversation forward. And I'm sure our audience also would love to know how to live stress-free and how mental health can be improved. If you all have some queries, please let us know and let the conversation we are trying to let coffee with Mr. Vats begin here. Huge round of applause for this session. Let's have a session called Coffee with BK Krina. That could be a virtual coffee sort of session, because just after the food, coffee might not be ready. A lighter part of it, let's initiate. It is going to be a good session, I am very much sure, and I am very much sure that we'll make it more interactive, and we'll have few queries from audience side also, and it is always welcome. Kindly raise your hand whenever you have any query. We'll ask with Sister BK Krina, and hopefully that we'll get the answer and we'll know how to live the life. Today we are going to focus more on that how to live the life, We are living the life just for the sake of living. So can we make it meaningful? Can we make it more purposeful? Can we make it for others? And stress is one of the biggest problem nowadays we all are facing. And I'm sure that only as of now in the hall, only Sister BK Krina knows that how to get rid of the stress. So ladies and gentlemen, may I request you to kindly welcome Sister Krina with big round of applause. And let's initiate the talk. Sister BK Krina, एक जीवन तो हम जी रहे हैं, उस जीवन को हम महत्वपूर्ण कैसे बना सकते हैं, अपने लिए नहीं बाकियों के लिए, और सही दिशा क्या है जीवन जीने की? जरूर. First of all, thank you so much, Mr. Ashish ji, for this very beautiful, cordial invitation. I'm so happy to be amongst so many achievers in the healthcare area or sphere of life, and maybe other areas too. I may look different from all of you all, but yet as human being we are all the same. This white dress is more of a role playing. You may be in a suit, you may be in another dress, and I'm in a white dress. We're all role playing. But as human beings, we're all quite the same. There was a test done in different countries, and it was found that whether an African, whether Indian, whether American, where the question of emotions come, we are quite alike. So when we come down to living, I think first of all it's important to be in the consciousness of a human being. Right? True. Nowadays we are so attached to the roles that we are playing. We are more identifying ourselves with the work that we are doing. There was this one employee of the company, he was called by his boss in his office, and the boss asked him, I just have a simple question for you. May I know who you are? And he said, sir, I am the chief engineer of your company. So the boss said, I didn't ask what you're doing. I want to know who you are. Then again he thought, and he said, oh my God, I'm from 20 years I'm in his engineering department, sir. I'm your chief engineer. And he said, no, you've not understood my question. Are you going to retire after 5 years? He said, yes, sir.
Okay, then let me know after 5 years who are you going to be? And he thought for a little more time and said, perhaps the ex chief engineer. This is the truth with us. When we were children, did we really care about any name? Whether somebody called me with my true name or whether any pet name or any other name, did we really care about it? Not at all. I mean, we were beyond that. And as we started growing, even in our teens or just before our teens, like we didn't really care about our body too. We used to play as much as we want. We used to dirty ourselves as much we want. We were hurt so many times. We didn't care about it. What were we caring for at that time? We were caring for our life. We were caring for that moment of what we were, where we were, with whom we were. And our main aim and purpose of life was to enjoy every moment. But then the schooling, the whole system, when we get caught into those systems, फिर इससे हम थोड़े हट जाते हैं, the naturalness. सब कुछ होता है हमारी अच्छाई के लिए. But somewhere that natural being is not able to accept everything. And when you're not ready to accept everything, what starts coming into your identity? Certain wrongs, certain aspects which you really are not. ऐसा कभी अनुभव किया है कि धीरे धीरे मेरे जीवन में ऐसी कुछ चीजें मेरी आई जो मैं नहीं था, या मैं अपने आप को कभी ऐसा देख ही नहीं सकता था. For example, a reaction of anger. शायद अभी ऐसा नहीं फील होता होगा, लेकिन remember the first time when you got angry. You must have felt strange. मैंने ऐसा कभी नहीं किया पहले. I don't know why did I react in such a way. And such more things started happening. Remember. And then we slowly started identifying ourselves with every little thing that was happening with us, with every person we started connecting with all work that we started doing. We started identifying ourselves with all of that. Did we? Are we? Absolutely. And we feel that is life. While we actually strangely started going away, moving away from our life. Now if I tell you, really, are there certain moments in your life where you are neither in the past nor caught up in the future? How many of you would say, yes, I live in that way? Please raise your hands. We are always caught up between past and future. A yogi is the one who is always in the present moment, even while having lunch, even while having a glass of water. Life was very simple, and it is still simple, but we have complicated it by wrongly identifying ourselves with so many things that we were not. गलत आइडेंटिटी, गलत पहचान अपनी कैसे हमें सच्चा सुख, सच्ची खुशी दे सकती है? जब हम अपने आप में रहते हैं, what I am really, nobody is able to disturb me. Nobody is able to snatch my happiness, which I feel is my right. It's my property. Nobody can snatch it.
पर अभी तो क्या होता है, even if a 100 rupee note is gone away from our wallet, immediately things change, don't they? बदलती है ना चीजें, क्योंकि हमने अपने आप को आइडेंटिफाई कर दिया है। एक बार एक व्यक्ति ने 25 लाख की नई गाड़ी लाई, सब बहुत खुश थे, लेकिन छोटा बच्चा, उसको क्या समझ में आता है, उसने एक कॉइन लेके पूरा स्क्रैच कर दिया। सोचो मालिक की हालत क्या हुई होगी वो स्क्रैच देख के। अभी नई गाड़ी लाए हैं और वो सचमुच अंदर से बहुत दुखी हो गया, बाहर से एंगर। क्यों हुआ वो गुस्सा? क्योंकि उस समय वो नहीं था, वो गाड़ी बन गया था। He was that 25 lakhs car. अब सोचिए आप, हम कितनी चीजों से अपने को अटैच कर देते हैं, तो क्या हम सही रीति से जी सकते हैं? एक बात तो हमको कॉन्स्टेंटली अपने मन में रखनी पड़ेगी ना, कि हम ऐसी सृष्टि में जी रहे हैं जहां पर दो चीजें हैं, एक है मैटर, एक है एनर्जी। एनर्जी कभी नहीं बदलती है, लेकिन मैटर बदलता रहता है। वैसे हमारा भी परिचय ये दोनों के साथ है। हमने जो कुछ भी पाया है, लिया है, प्राप्त किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये बॉडी के लिए अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोला है? है कोई बैठा यहाँ जिन्होंने अपने पेरेंट्स को ओनली फॉर दिस बॉडी थैंक यू बोला है? नहीं तो बॉडी कैसे मिलता पेरेंट्स के बिना? नहीं, एक जन ने भी नहीं किया। इट्स नॉट टू लेट, भी कर सकते हैं। दिल फील सो गुड। क्यों कहते हैं पेरेंट्स का ऋण कभी चुका नहीं सकते? इट्स बिकॉज ऑफ दिस, दे हैव गिवन यू सच अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं आपको बोलूं मैं 5 करोड़ अभी का अभी दे सकती हूँ, आप एक हाथ अपना दे देंगे मुझे? कोई देगा? इतना वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है, करोड़ों की प्रॉपर्टी तो यहीं पर है। लेकिन हमें पता है ना, ये हमेशा नहीं होगा। नो वन कैन स्टॉप द बॉडी फ्रॉम चेंजिंग। दैट इज मैटर। मैटर अपना रूप बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। हम जिसे मृत्यु कहते हैं ना, वो मृत्यु नहीं है। इट्स जस्ट अगेन द चेंजिंग ऑफ द मैटर। हमने उसको मृत्यु शब्द दे दिया है। अदरवाइज एनर्जी इज इटर्नल, एनर्जी इज कांस्टेंट। इसलिए नहीं दीपक भाई ने बताया कि आत्मा के लिए हम कहते हैं भाई शांति मांगते हैं, बिकॉज वी नो कि अगर कुछ अभी है वो है एनर्जी, आत्मा। बॉडी जो मैटर है उसका रूप बदल गया है। अब बताओ आप किससे अटैच थे? उसके बॉडी से या उसकी आत्मा से? नहीं। अगर हम रियलिटी में नहीं जी रहे हैं तो हम कैसा जीवन जी रहे हैं? कहते हैं प्राणी भी ऐसा ही जीवन जीते हैं, पक्षी भी ऐसा जीवन जीते हैं, लेकिन वो लोग इतने करप्टेड नहीं हुए हैं। क्यों पता है? आइदर यू कंप्लीटली बिलीव इन एनर्जी, एक चॉइस है आपके पास, कंप्लीटली आप एनर्जी कॉन्शियस में आ जाओ, या आप जो भी मैटर से मिला है ना उसकी वैल्यू को समझो। दिस इज द वे वी हैव टू लिव। और दोनों को कंबाइन क्यों ना रखें हम बेटर लिविंग के लिए? फॉर एग्जाम्पल,
मेरे हाथ में पैसा है, दैट इज मैटर, लेकिन मेरी एनर्जी है कि मैं इस पैसे का उपयोग कैसे, कब, कितना करूं। पैसे है इसीलिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। इज दैट द राइट वे ऑफ लिविंग? नहीं। सपोज मेरे पास मोबाइल है, then it is me who is going to talk through that mobile. I'm going to connect with people. मैं अपने कार्य कराने वाली हूँ, मैं नई फ्रेंडशिप्स बनाने वाली हूँ, कितना कुछ उस मोबाइल से मैं करने वाली हूँ। But you know what happens nowadays? Because we are not aware of the energy, मोबाइल का यूसेज हम जितना करप्ट करना चाहे उतना कर सकते हैं। Is that the way of living? Leisure is very important for living. Very important. But what type of leisure? मैं थक गया हूँ, I have come out of a problem, I have come out of a conflict, I need leisure. Should I go to a bar? Should I involve in such an activity to get relief? क्या वो मुझे स्ट्रेस फ्री करेगा? या मुझे अपनी एनर्जी को रिचार्ज करना है? अगर मैं ऐसे प्रॉब्लम से आई हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? अपनी एनर्जी को रिचार्ज करना चाहिए। एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही थी तो वो बहुत भटका, फिजिकली वो बहुत स्ट्रांग था, इसलिए एक जो वुड कटर था उसकी बहुत बड़ी कंपनी थी, तो उसने वहाँ पूछा और वुड कटर ने, मालिक ने कहा आप करो, मैं देखता हूँ आप में कितनी स्ट्रेंथ है, क्या कर सकते हो। तो सचमुच उसने एक हफ्ते के अंदर लगभग 15 से भी ज़्यादा झाड़ काट लिए, ज़्यादा होंगे शायद। बॉस वॉज रियली इम्प्रेस्ड, जॉब दे दिया। अब 2, 3, 4 हफ्ते गुजरे और बॉस अपने रूटीन पर राउंड पे आए और उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति इतने झाड़ नहीं काट रहा है जितना वो पहले काट रहा था। तो उसने कहा क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं जैसे कर रहा हूँ उतनी ही मेहनत कर रहा हूँ। तो बोला आपने कभी आपकी जो कुल्हाड़ी है, एक्स को आपने शार्पन किया? तो बोला नहीं, टारगेट इतना सॉलिड था ना कि वो करने का टाइम ही नहीं था। अब आपका एक्स ही शार्प नहीं है तो झाड़ जल्दी से कटेगा ही नहीं। जीवन काट रहे हैं हम, पर अपने एक्स को हम शार्पन नहीं कर रहे हैं, तो अपनी हैप्पीनेस कट हो रही है, अपना विल पावर कट हो रहा है। हमें एनर्जी लेवल पर इतने लॉसेस हो रहे हैं कि in spite of being a big man, in spite of having a big name, fame, money, somewhere we are not happy. People are giving a great applause. I am not feeling it. एक बार एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट को ऐसा हुआ, he used to get so many awards, और वो अवार्ड लेता और उससे वो आनंद नहीं आता जो सब तालियां बजा रहे थे, और उसको वो प्रश्न उठता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, why am I not feeling that happiness? उसके केस में ऐसा हुआ कि उसकी नज़र उसी के एटिक में, घर में पार्टी चल रही थी फुल फोर्स, पर इसका मन नहीं है पार्टी में। वो अपने एटिक में जाके बैठ गया और वहाँ उसका एक किताब के ऊपर नज़र गई जिस पे लिखा था मेडिटेशन। उसे नहीं पता था कि मेरी नज़र इस पर क्यों गई है, क्या गई है, लेकिन फिर बाद में उसको ये बात रियलाइज़ हुई, मे बी इट वॉज थ्रू मेडिटेशन, पर उसको रियलाइज़ हुई कि आई नीड टू शार्पन माई सेल्फ ओकेजनली, पीरियोडिकली. Leisure for me should be to enhance
माई एनर्जी। देखो आजकल कितना हेल्थ केयर का शुरू हुआ है, जहाँ आपको कहते हैं प्लीज़ कम फॉर डिटॉक्स, आप आइए, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होंगी, आपके पैरामीटर्स ठीक हो जाएंगे, यू विल फील वेरी फ्रेश। अच्छा लगता है ना? कभी आप गए होंगे 10 डेज़ के लिए, हफ्ते के लिए, पर जब वापस आते हैं फैमिली के साथ, हम वेकेशन पे जाते हैं, पास वापस आते हैं, प्रॉब्लम्स तो वही के वही खड़े हैं, क्योंकि दोज आर नॉट द रियल मेथड्स नो टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। हम क्या करते हैं, 1 more minute to go, हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम नया आया है लेकिन जवाब पुराना देते हैं। Every problem seeks a new answer, and a new answer can come from a new powerful mind. Mind? Do you ignore this thing called mind? Do we? पूछो अपने आप से। कितना दिन बीत जाता है, कितने घंटे बीत जाते हैं, पर मैं कभी अपने आप को ये नहीं पूछती हूँ कि मैं जो सोच रही हूँ क्या वो यूजफुल है, क्या वो मुझे हेल्दी बनाएगा, क्या मुझे वो सोल्यूशन देगा। घंटों बीत जाते हैं और उसमें हमने कईयों को फोन करके वो बात बता भी दी होती है, बट इट्स नॉट गिविंग सोल्यूशन। हमें एक बार सेल्फ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग मिली थी, और सेल्फ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में क्वेश्चंस थे, लेकिन उस व्यक्ति ने बोला आपको सीधा आंसर देना ही नहीं है, यू विल बी अ वेरी एक्सपर्ट, प्रश्न देखकर जवाब दे देना, ऐसे मत करना। कैसे करना? पहले अपने आप को विड्रॉ करना, विड्रॉ करके अपना एक मन का एक स्थान तो होगा ना जहां पर आप केवल हो और कोई नहीं है, वहां पर चले जाओ। अब ये आपका कमरा है और आपके सामने एक स्क्रीन है समझो, वो स्क्रीन पे ये क्वेश्चन के रिलेटेड सिचुएशन आ रही है। अब आप देखो कि उस सिचुएशन में आपने कैसे एक्ट किया, तो आपको उस क्वेश्चन का नया आंसर मिलेगा। इसलिए कभी भी कोई क्वेश्चन का आंसर देना है तो कभी रिएक्ट नहीं, कहते हैं ना सोच समझ के आंसर देना, विड्रॉ करना अपने आप को, अपने आप से बैठना, अपनी स्क्रीन पे वो सिचुएशन लाना, फिर आंसर देना, एंड यू विल फाइंड यू आर एबल टू डिस्कवर so many new things about yourself, whether it is your strength or whether it is your weakness, but it will be your own discovery. Thank you. Very wonderful. सिस्टर बी के करीना ने जिस तरह से एग्जाम्पल्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है, मुझे लगता है हम लोगों के दिल तक वो बात पहुंच गई है। मैं ऑडियंस को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिकॉज इतना एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे सामने अवेलेबल है। इफ़ समबडी वांट टू नो मोर अबाउट सर्टेन थिंग्स, तो आप फ्रैंकली आप बात कर सकते हैं। शांति? यस यस, वी कैन टेक क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस। यस यस यस, गोपी सर, गोपी सर। I'll give you back this one. Take this one. हेलो, नमस्कार, प्रणाम। नमस्ते जी। एक स्थिति है एकांत, जी अकेलापन। जी, दोनों के अर्थ एक जैसे दिखते हैं लेकिन बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। और व्यक्ति हर वक्त किसी न किसी का साथ चाहता है, बिल्कुल। और वो साथ नहीं मिलता है
तो वो अपने विचारों के आ जाता है। आज जब बच्चा पैदा होता है तो उसे हर वक्त माँ चाहिए। शुरू के 2 दिन में 3 दिन में माँ या फिर कोई नर्स, और वो इतना डिपेंडेंट रहता है कि माँ यदि थोड़ी देर नहीं दिखी तो रोने लगता है। तो जो बचपन में माँ है वो जवानी में और बढ़ती उम्र में किसी का साथ है, हाँ जी और एकांतपन हमें डराता है, जी, अकेलापन तो बहुत डराता है। बहुत डराता है। अब इधर एक मैनेजमेंट की बात आई है हाँ जी कि 2 व्यक्ति आपस में मिलने के लिए जमा हुए, अपॉइंटमेंट लिया। वत्स जी वहाँ बैठे हैं, वत्स जी और आप बैठ गए। अब 5 मिनट तक न वत्स जी कुछ बोल रहे हैं न आप कुछ बोल रहे हैं, तो ये बात दोनों को गवारा नहीं होगी, बहुत नागवार होगी, और दोनों अंदर से घबराएंगे। जी Ladies and gentlemen, और इस स्थिति को अगर कोई कर सकता है सही रूप से, तो वो है ऋषि मुनि या ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार। जी तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कीजिए, जी ज़रूर। ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे पहले कि सिस्टर करीना रिप्लाई करें, आई वुड लाइक टू वेलकम one of the most glamorous personality of India, our chief guest for today, Dr. Aditi Govitrikar. She is with us now. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause. She is not only Mrs. World 2001, she is a doctor and she is one of the famous Bollywood film actress. So ma'am, we are very happy to see you here and we welcome her. Just give us few minutes. Thank you. जी, सो हम एकांत, सन्यासी, संत, ऋषि मुनि एकांत की बात करते हैं या एकांत में चले जाते हैं। मीनिंग ऑफ एकांत, एक के अंत में। आपने कहा ना, साथ तो चाहिए ही, बना ही ऐसा है, दुनिया की जो सेटअप है बनी ऐसी है, बिना साथ के कभी आप हो ही नहीं सकते हैं। ऋषि मुनि भी एक के अंत में जाते थे। एक क्या होता था उनके लिए? या तो ब्रह्मांड, या तो जिसे हम कहते हैं द कॉस्मिक एनर्जी, वो उसी के अंत में जाने का लक्ष्य रखते थे। इसीलिए वो घर बार छोड़ के ऐसी जगह पर जाते जहाँ लोग न मिले, और धीरे धीरे ऐसी तपस्या करते थे कि वहाँ की एक्टिविटी भी वो कम कर दे, और वहाँ का भोजन भी ऐसे मिलता था, खा लिया 6 मास तक, बिल्कुल खाने की ज़रूरत नहीं। ये उनकी एकांत है। अब हम समाज में, परिवार में रहते हैं, हमें एकांत मिलता है। आजकल हम देखते हैं लोगों को अकेलापन फील होता है। साथ है, फैमिली है, फिर भी अकेलापन फील होता है। क्यों फील होता है? एक ही रीज़न है, वी हैव gone slowly, gradually far away from ourselves. हम अपने से ही बहुत दूर चले गए। हमारी आंखें, हमारे कान है ना, वो सब बाहर की चीजें देखती है। तो आदत क्या पड़ गई? You would like to say anything? No, I'm listening to it. Okay. So सब आदत क्या पड़ गई है? सब बाहर का देखने की। और बाहर का देखते हैं तो नेचुरली ध्यान हमारा बाहर रहता है। लेकिन जो हम अंदर है, हमारा हकीकत, हमारी जो वास्तविकता जो अंदर है, उसको हम इग्नोर करते हैं। इसीलिए कभी कभी ऐसी स्टेट आ जाती है लाइफ में, साथ में होते हुए भी अकेलापन फील होता है, क्योंकि हमारे डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस
हमारे देखने वालों के लिए सुनने वालों से बहुत हो जाते हैं। और जब डिमांड्स और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाते हैं और वो हमेशा मीट थोड़ी होंगे, फिर धीरे धीरे वो हमारे अकेलेपन में ले जाते हैं। दूसरा, लाइफ में बाहर से सब कुछ आ रहा है लेकिन अंदर का ग्रोथ नहीं हो रहा है। अंदर का ग्रोथ क्या है? हैप्पीनेस, विजडम, लर्निंग्स, बाहर में जो किया उसकी लर्निंग्स, उसके विजडम जो आती है अपने अंदर, प्रेम, लव बढ़ना चाहिए दिन प्रतिदिन, काइंडनेस ये बढ़नी चाहिए दिन प्रतिदिन, अंदर की स्टेबिलिटी, एक आनंद जीवन का बढ़ना चाहिए। जब वो चीज़ें कम होती जाती है अपने अंदर, फील होना, नेचुरली आपको अकेलापन लगेगा। सो अकेलापन इज नॉट बिकॉज ऑफ आउटसाइड पीपल और एनीथिंग। अकेलापन अंदर के खोखलेपन के कारण फील होता है। ओम शांति। और हमने अकेलापन को कैसे हटाना है और अकेलापन किस कारण से आता है, ये सिस्टर बी के रीना जी ने हमें बताया है। और बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हमारे सामने प्रेजेंट किए हैं जिससे कि हम एक्चुअली ओरिजिनल लाइफ से हम कनेक्ट हो सकते हैं। अब हम इसी चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे क्योंकि एक हेल्थ केयर हमारा कॉन्क्लेव है और जो हमारी चीफ गेस्ट ऑफ द डे डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर है वो भी कहीं ना कहीं हेल्थ केयर से ही कनेक्ट होंगी, हेल्थ केयर से कनेक्ट हैं। और उनसे भी हम लोग जब चर्चा के दौरान ये पता करेंगे कि शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट ऑफ द कंट्री। तो हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग अपने लाइफ स्टाइल को कैसे ठीक कर सकते हैं और अपनी लाइफ को पूरे एन्जॉयमेंट के साथ कैसे जी सकते हैं। थैंक यू सिस्टर करीना फॉर योर वंडरफुल लेक्चर और एडवाइजेस टू अस। यू आर वंडरफुल। और इसी के साथ मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा। थोड़ा मेडिटेशन कराएं 2 मिनट। यस, वी शुड हैव अ 2 मिनट मेडिटेशन सर्टेनली। 2 मिनट मेडिटेशन। अच्छा जी, कोई बात नहीं, इतना भी बहुत। ठीक है, सो नाइस। Thank you so थैंक यू much. सो मच। प्लेजर, थैंक्स। Thank you. Huge round of applause for Sister Krina. Thank you so much. And as we move forward, of course, we have our chief guest, the beautiful Dr. Aditi Govitrikar, right in front of us, who is also an embodiment of how to live a good life. May I please request ma'am to come up on stage? We would like to felicitate you. Let's welcome her, Ashish Vatsi, with the felicitation before we see the AVs. Huge round of applause. She has been the Mrs. World, like we all know, and the beauty continues. We definitely would love to know from you as the wellness coach that you are currently, and you wear a lot of hats apart from being a family woman, a mother. How do you balance and look this stunning? That's a personal question I've put already. Huge round of applause for her, and we'll get to know her in the process. Calls for a beautiful photo op as well. The supermodel, the superstar of Bollywood, who wears a lot of hats currently, is right here with us. Should we put the AV? No. Let's have the beautiful AV. Former Miss World winner Aditi Govitrikar was a big name in modeling and showbiz back in the 2000s. She remains the first and only woman to have won the Mrs. India title from India. Although over the years the actress has transformed a lot, but the charm and beauty she possessed decades back are still the same. Aditi appeared in a couple of music videos including Adnan Sami's Kabhi To Nazar Milao. She made her on-screen debut with Telugu film Thammudu. Aditi then featured in Bollywood films like 16 December, Paheli, Victoria Number 203, De Dhanadhan, Bheja Fry 2 to name some.
Apart from Hindi and Telugu, she also did a few Marathi films including Smile Please. Her last appearance was in the film Koi Janina in 2021. Aditi has also done quite a lot of TV shows and serials like Big Boss, Fear Factor, Khatron Ke Khiladi and Suryaputra Karn. Apart from her career in film world, Aditi is now a wellness expert and psychologist. The 45-year-old beauty is currently spreading awareness around holistic living and mindfulness and helps people with various mental health issues. Earlier, in an interaction with E-Times, Aditi spoke about the pressures of working in the film industry. She had said, and I quote, "I am grateful that I had wonderful friends in the industry and they were my go-to people. Irrespective of which field you are in, social support becomes crucial. There have been tough times, but when you reach rock bottom, you know you can only go up, and I came out of it with help from my friends and the support system. That's also the reason I got into psychology, to help those who are struggling." For more news and updates, stay tuned to E-Times. Back to the center stage. I'll give the mic to you all. So like we had mentioned, there is a special announcement about something which will lead the way for the future. That is the Z10 News. Huge round of applause for this initiative coming in front of you all. Today, in the auspicious presence of Brahm Kumari ji and our chief guest for the day, we are announcing the launch of Z10 News at Maharashtra. So, ladies and gentlemen, please give a big round of applause for that. Z10 News is, as of now, is a national news channel, and which will be on the website, which will be on the satellite from 15th of August. And may I request our chief editing consultant of Maharashtra, Dr. Vagi Saso, to please be on the stage. And I also request Madam Durgeshwari to please come on the stage to witness the launch of Z10 News by Dr. Aditi and Dr. Vagish Saraswat. And I would also like to request Mrs. Alpna Bhardwaj to please be on the stage. Special moment calls for a huge round of applause. And may I request for the Z10 audio video, please. आप देख रहे हैं Z10 न्यूज, नए भारत की नई आवाज। I'd like to request Dr. Vagish Saraswat to please brief us about this new launch as a Z10 television network or news channel, what it is going to do in Maharashtra in next 6 months. Dr. Vagish Saraswat, please. Ma'am. आशीष जी आप भी आइए। चैनल बहुत हैं इस देश में। मीडिया, कोई गोदी मीडिया है, कोई गोदी के विरोध में मीडिया है, लेकिन हमारा मानना है कि मीडिया मीडिया होता है। मीडिया को तटस्थ होना चाहिए, मीडिया को खबर के तौर पे देना चाहिए, ना कि किसी के प्रचारक के तौर पे। Z10 नेटवर्क इसी एक कोशिश की कड़ी है। 15 अगस्त से सैटेलाइट पे लॉन्च होगा। अभी कुछ स्पेशल चैनल्स पे ये दिखाई दे रहा है और YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से हमने चलाना शुरू किया है ताकि ट्रायल रन लोगों के पास पहुंच सके। महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में हम कोशिश करेंगे कि आप सबका सबसे प्यारा चैनल बन सके Z10 न्यूज़। आशीष जी हमारे साथ हैं, दुर्गेश्वरी जी हमारे साथ हैं, अल्पना जी मेरे हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस इंडस्ट्री का एक ऐसा चेहरा जिसने पहली बार मिसेस इंडिया बनने की
जो गौरव है वो हासिल किया था। ऐसा व्यक्ति ऐसे घर से जो घर घर में पहुंचा सकता है हमारे चैनल को, ऐसी अदिति जी की गवाही में ये हमारा चैनल की हम घोषणा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आशीष जी। मैं साथ ही ये भी ऐड करना चाहूँगा कि Z10 न्यू चैनल को जैसे ही हम लोगों ने इसको लॉन्च किया, विद इन 2 मंथ्स हम लोगों के पास 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। सो दिस शोज़ दैट कि हम किस गति से बढ़ने जा रहे हैं। ये Z10 न्यूज़ ये जी ग्रुप से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि Z को जी बोलते हैं तो इसीलिए हम भी इसको जी बोलते हैं। अदरवाइज दिस इज Z10 न्यूज़, दिस इज नथिंग टू डू विद दिस इज आवर चैनल, दिस इज completely ours, and we are there in the world of media also from today onwards. Ladies and gentlemen, please have a good, please give a big round of applause. Durgeshwari ji, if you want to say something. Just best wishes from my side. Thank you. Heartiest congratulations. I mean, this is a great initiative, and I wish all the success of the world coming to you. Thank you. Dr. Aditi will have a session, Coffee with Ashish Vats, featuring one of the most glamorous personalities in front of me, Dr. Aditi Govitrikar. Thanks, Dr. Vagish Saraswati. Thanks, Madam Durgeshwari. Thanks, Alpna Bharadwaj, for this. Coffee time it is, right? Let's have a huge round of applause for the people here who will tell us more about how to live a healthy life. न्यूज़ वन इंडिया की तरफ से और बैंड्स काउंसिल रेटिंग्स की तरफ से मैं डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये जो कार्यक्रम है न्यूज़ वन इंडिया पर टेलीकास्ट होगा और डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। हम लोग जब भी इस तरह का कोई कार्यक्रम करते हैं तो हम लोग बॉलीवुड में भी ऐसे लोगों को चुनने की कोशिश करते हैं जिनके पीछे कोई मकसद होता है लाइफ का, और एक डिफरेंट जिसको बोलते हैं ना वुमन ऑफ सब्सटेंस विच शी इज़, सो शी इज़ विद अस टुडे एंड वी आर वेरी थैंकफुल मैम दैट यू हैव टेकन आउट द टाइम। हमें पोस्टपोन भी करना पड़ा प्रोग्राम बीच में, बट यू आर ऑलवेज विद अस एंड सच अ मार्वलस पर्सनैलिटी। आई एम पर्सनली कनेक्ट टू हर बिकॉज शी इज़ सो काइंड एंड कर्टियस। ये अब मैं आपको अपनी तरफ से बता सकता हूँ, और मैंने इनके बारे में बहुत पॉजिटिव सुना है। और कोई भी अगर आप कोई भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी हेल्थ वेलनेस के रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है तो इस सेशन के दौरान आप कर सकते हैं। मेरे एक अपने क्वेरीज़ हैं जो मैं अब पर्सनल तौर पे जानना चाहता हूँ, लेकिन हम लोग आपको रिप्रेजेंट जरूर कर सकते हैं मीडिया होने के नाते, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वी कैन मेक दिस सेशन एन इंटरैक्टिव वन। सो वी आर स्टार्टिंग। डॉक्टर अदिति, आई स्टिल रिमेंबर कि हम लोगों ने आपकी बहुत धूम धड़ाके से एंट्री हुई, और तब हम आपको एज ए फिल्म एक्ट्रेस ही जानते थे, और आपने जब उस टाइम पर एल्बम्स का समय हुआ करता था और आपने एल्बम पर जो बड़े स्टार के जो सिंगर्स थे, बड़े जो नाम थे, उनकी आप पहली पसंद थे। मुझे याद है गोविंदा के साथ भी आपका एक सॉन्ग है जो बहुत काफ़ी प्रचलित रहा था, और मैं गोविंदा को पर्सनली बहुत पसंद करता था अपने उस समय में दौर में। तो वो उस गाने से मैम को मुझे लगता है कि मेरी नॉलेज में उस समय से मैम का रहा था कि कभी ना कभी मैं उनसे मिलूँगा, और आज ये एक तरीके से सपना हमारा पूरा हो रहा है। तो आप हेल्थ केयर में आपने पहले कदम रखा, फिर आप अचानक एज ए बॉलीवुड सेलिब्रिटी बनी। ये एकदम ट्रांसफॉर्मेशन था, आपने कैसे इसको मैनेज किया? फर्स्टली गुड आफ्टरनून एवरीबडी। आई थिंक थोड़े डल लग रहे हैं सब लोग, काफ़ी टाइम से बैठे हैं ऐसे मुझे लग रहा है। सो आई थिंक व्हाट आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस सेशन विच इज़ कॉफ़ी विद आशीष वत्स featuring me is that I want everybody to stand up and just stretch. So let's all stand up and stretch. किसी को कॉफ़ी चाहिए तो प्लीज़ बोल दीजिए, we can have coffee alongside. Please sit. So what did I do, or why did I make you get up, is because I want your attention.
मुझे लगता है कि सबसे प्रेशियस रिसोर्स इन लाइफ इज़ टाइम. तो अगर आपका ध्यान हमारे सेशन पे नहीं है, आप कहाँ गोवा पहुँचे हो या लंच के लिए रुके हो या वट एवर, देन इट्स रियली, आई मीन, यू आर नॉट बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. बीके करीना जी ने आपसे कहा था कि एकांत में रहना कितना मुश्किल हो गया है. तो आई वुड कम्प्लीटली कंकर विथ हर. और मेरा ये भी मानना है कि बीइंग इन द मोमेंट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हार्ड, क्योंकि हमारा मन तो चंचल होता है. सो आई डोंट वांट दैट. आई वांट योर अटेंशन. आई लाइक स्पॉटलाइट. I am, an actor, so you have to give me that. So answering your question, I think life had that plan for me. मैं बचपन से ही मेडिकल डॉक्टर बनना चाहती थी और मैंने बहुत मेहनत से ग्रैंड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मुझे मिला, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे ये कहा था कि अगर तुमको अपने मेरिट पे नहीं मिलता है कहीं पे एडमिशन इन द, बिकॉज आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, तो आई विल नॉट पे एनी डोनेशन. यू विल हैव टू गेट इट ऑन योर ओन मेरिट और देन यू चूज़ समथिंग एल्स. तो मुझे मतलब करना ही पड़ा, वो जो मेहनत करनी पड़ी वो तो की. एंड देन आई गॉट इनटू मेडिसिन. सो मेरा वो लाइफ टाइम का ड्रीम था टू बी अ डॉक्टर. लेकिन लाइफ हैड समथिंग एल्स इन स्टोर फॉर मी. ऐसे ही मजाक में किसी ने मेरे फोटोग्राफ्स भेज दिए ग्लैडरैक्स सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट में. मैंने ऐसे ही पार्टिसिपेट कर लिया. तब तक आई हैड नॉट, मेरे पास एक लिपस्टिक नहीं थी, एक मतलब हील्स नहीं थे, बिकॉज आई वॉज स्टेइंग इन अ हॉस्टल. आई टू वेयर सलवार कमीज विद एन एप्रन विद अ स्टेथोस्कोप, गो एंड डू माई राउंड्स, एज इन आई वॉज स्टडिंग दैट टाइम. तो वो जब मैं जीती, ग्लैडरैक्स सुपर मॉडल जब जीती, उसके सेकेंड डे पे मुझे पॉन्ड्स फेस वॉश ने साइन किया एज फेस ऑफ पॉन्ड्स. और उसके बाद अपने आप ही काम आने लगा. तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर मुझे स्ट्रगल करना पड़ता इन ट्रू सेंस, तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव डन इट. आई वुड हैव सेड हाँ ठीक है, मज़ा आया, नाउ लेट मी गो बैक टू मेडिसिन. फिर मैंने एमडी गायनैक में मुझे एडमिशन मिली फॉर्चुनेटली. तो वो मैंने कहीं 8 महीने तक वो पढ़ाई की. बट देन ये फील्ड और वो फील्ड दोनों मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया. तो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि 1 साल तक मैं ट्राई करती हूँ इस फील्ड को, क्योंकि आई मीन दिस इज़ अ शॉर्ट लिव्ड फील्ड, क्या पता क्या होगा. But well, I'm still here. Now, 7 years back, I felt that intellectually I was not getting stimulated enough in this field. So I came at a crossroad where I said that I need to use my brain, because as you guys know, use it or lose it. And this is a big message that I'm sharing with you, because हमें लगता है कि college का education हो गया तो अभी क्या सीखना. Sure, like me, you don't have to give exams, because I've given at least 21 एग्ज़ाम्स सो फार इन लास्ट 6-7 years. तो मेरे बच्चे कहते भी है कि मम्मा हमारे एग्ज़ाम्स दो, आप अपने एग्ज़ाम्स क्यों दे रहे हो. सो ऐसे नहीं बेटा, ये आपकी जर्नी आपको करनी है. लेकिन आई थिंक टू एडुकेट योर सेल्फ, टू कॉन्स्टेंटली चैलेंज योर सेल्फ, and it can be anything. It need not be a certain stream. You can learn a language, you can learn an instrument, you can go back to childhood and think about what hobby you had and go into depth of that. That will stimulate your brain. If nothing else, अगर आप right handed हो तो left hand से brush करिए, तो आपको पता चलेगा कि brain gets challenged. Of course sudoku है, puzzles है, ये सब तो है ही, but challenge your brain. Don't just not educate yourself and use your brain, because brain health is very very crucial and I stand for brain health. Not many people talk about it. हम लोग जिम में जाके मसल्स तो बना देते हैं, लेकिन ब्रेन का क्या, उसको कैसे आप एक्सरसाइज करोगे. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड विद दैट थॉट, around 7-8 years back, I decided to go back to college. I just recently completed my 3rd master's in psychology from Harvard University. So 25th May is when I got my degree. So last 3-4 years, thank you. जो तालियां नहीं बजा रहे, आप सो रहे हो क्या? मुझे तालियां भी बहुत पसंद है. मैं दूर से आई हूँ. एक बार और जोरदार तालियां. सो मेरा मतलब मेरी जर्नी ऐसे रही है. अलॉन्ग साइड ऑफ कोर्स फिल्म्स तो चलती है, बिकॉज लाइक यू रियलाइज बाय नाउ आई एन्जॉय बीइंग ऑन स्टेज, आई एन्जॉय टॉकिंग टू पीपल. तो वो तो जर्नी चलती ही है. सो दैट्स वेयर आई एम एट टुडे, दैट आई वांट टू डू बोथ. आई वांट टू क्रिएट ट्रांसफॉर्मेशनल changes in people's lives. That's why I'm also just recently launched my own beauty pageant, which is called Marvelous Mrs. India, which is a transformational beauty pageant. It's not only that
married women or divorced or widowed or separated women will learn how to walk on ramp. But truly, in that 1 month of online training, I want to bring about that inner change, which I have already witnessed. I have created a program in which I had done that for everybody. So that's my new venture. Very nice to know about your initiative, ma'am, and really that's something which we can expect from you only, because you are a multifaceted personality. I mean, you are a successful women, successful doctor, successful Bollywood celebrity. We have seen many, I mean, your albums and movies, and you have done extremely well in Bollywood, and you are still doing it. Yes, I mean, this year only I mean, there was a new movie which was launched in OTT. I remember that with Bhagya Shriji. So, which is the best movie you feel, I mean, done by you, and why? Well, I don't think I've done a film which I would say, oh my God, this is the best film. I think the best is yet to come, because, of course, all the films that I have done, I'm extremely grateful. But I just feel that I have not been challenged as an actor so far. And perhaps the reason for that is because that's never been my focus. Matlab, you know, where you focus or where your energy goes is what happens. You manifest that. In that sense, I did act because films aayi mere paas, and then I said, okay, let me do it. But it was not like, oh my God, I want to be a Bollywood actor. That was never my goal. So then, I mean, my answer is that the best is yet to come. Can I request for audio video 2 of ma'am? And have my own nursing home, but life had something else in mind. When I was in my 3rd year, I participated in Gladrag's supermodel contest just for fun. There was no plan of becoming an actor or a model or celebrity even. I won that. And that's how the whole modeling field literally fell into my lap. Given that both the fields need 100%, sailing in 2 boats, I almost headed for a nervous breakdown. I said, okay, I can't do this to myself. I have to give one profession my 100%. After which I will go back to completing my Gynec and OBS. However, in the meanwhile, I made sure that I finished my MBBS. So yes, I completed my internship. I completed all the requisite steps that one needed to take to finish the degree. At that time, India, we didn't know. We didn't know in India that such a contest existed, because we were all about Miss World and Miss Universe and Miss Asia Pacific. After you became a Mrs., there was nothing left in the glamour field, which is why at that time women weren't coming out with their relationships, forget marriage. The only thing that kind of held me back at that point was my daughter was just about 1 year old, and to leave her and go to Las Vegas where the pageant was for 2 weeks was something that a mother's heart did not accept that easily. They said, you know, this is one in a lifetime opportunity. Why don't you go ahead and participate? But I never focused on Bollywood per se. I was pretty much focused on doing ramp and ad films. I enrolled myself in psychology. I said, I know human mind, human body. I've learned about human body. Now let me get a degree in human mind so that
as a whole, I know a human being, which is why I decided to go ahead with psychology. I do a lot of corporate workshops. I do a lot of personal counseling sessions. Luckily for me, what happens is both the fields are in my control. So I give out the timings for, say, a session when I'm free. If I have an acting job, I do not take any counseling sessions from Harvard University, which is an online and offline course. So in summer, I'm hoping to go to Harvard to complete it so that I get my second master's from Harvard. So an inspiring journey और lots of hard work certainly, yes. मैम आपका actual passion क्या रहा है? It's medical science, it's acting. Acting में आपने बोला कि it's destiny actually called me, but you did a hard work in that as well. या जो आपके नए initiatives हैं वो आपको main passion आपका क्या है? I think learning is my passion. Very inspiring, very inspiring. So I constantly listen to podcasts and read a lot. I'm quite a voracious reader. So if I were left to my own devices and I didn't have to work to survive in that sense, I would only learn. I have a list of 10 degrees that I have written down in my notes which I want to complete. So that's on my bucket list. But right now I've given it a break because I need to work. Very inspiring personality. We Brands Council ratings में जैसे हम लोगों को लोग जानते हैं तो हम लोग बहुत ही selective अपने जब कोई प्रोग्राम करते हैं तो चीफ गेस्ट पे हम बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क करते हैं. जैसे 2022 में हमारी चीफ गेस्ट थी किरण बेदी. 2021 में जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो दुष्यंत चौटाला थे जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं. और इस साल जो हमारी चीफ गेस्ट है वो डॉक्टर अदिति है. सो वी कैन टेल यू दैट वी ऑलवेज वर्क ऑन द पर्सनैलिटीज़ बिकॉज अल्टीमेटली सिर्फ चीफ गेस्ट अगर क्योंकि वो हमारे ब्रांड्स काउंसिल रेटिंग्स का भी एक तरीके से प्रेजेंटेशन होता है कि हम लोग किस लेवल पे अपने कार्यक्रम को कर रहे हैं. और एक जैसे मैंने बोला कि विमेन ऑफ सब्सटेंस हमारे सामने बैठे हैं तो दैट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट कि हम किस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं. हम में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर अदिति का कोई वीडियो अभी तक नहीं देखा एक्सेप्ट दीज टू? कभी ऐसा है कोई फिल्म में कुछ? इज़ देयर समबडी? बिकॉज आई हैव देन एन सरप्राइज फॉर देम. और देयर इज़ नो हेजिटेशन. हो सकते हैं कि बहुत सारे लोग हम लोग क्योंकि अपने कामों में व्यस्त रहते हैं कभी हमने डॉक्टर अदिति का कोई मूवी वीडियो या ऐसा नहीं देखा हो. इज़ देयर एनीबडी? Sister Krina, you have seen? Yeah. Anybody else? Yes, you haven't seen? Yeah. Anybody else? मैं तो बहुत बड़ा फैन रहा हूँ मैम का. तो so I have another AV for मैम of मैम for those जिन्होंने कभी मैम को बाई चांस मिस किया है. Let's have. आज से मुझे लगता है ये वीडियो आज से 10-15 साल पहले आई होगी. वो तब भी उतनी ग्लैमरस थी, वो आज भी इतनी ग्लैमरस है. एंड आई एम श्योर कि हमेशा उतनी ग्लैमरस रहें. एंड लेट्स हैव दैट AV प्लीज. कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ. जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ. हम भी तो हैं तुम
I'm sure. So I'm sure by now we know the person sitting in front of me is very inspirational और informative तो है या बहुत ही काबिल है हर तरीके से and हम लोग यही चाहते हैं कि मैम और आगे ग्रो करें और हम लोगों से भी अभी कनेक्ट बना है एंड सर्टेनली ये भी हमारी डेस्टिनी है मैम कि हम आपसे मिल पाए आज काफ़ी टाइम से ये ड्यू था कि हम डॉक्टर अदिति गोवित्री को कब अपने प्रोग्राम में बुलाएं कब मौका मिले और आज एक्चुअली और आज की जो ये प्रोग्राम में डॉक्टर अदिति गोवित्री कर रहे हैं इसमें मेरा और मेरी टीम का से ज़्यादा रोल ना डॉक्टर अदिति का ही है कि उन्होंने फिर भी हम पे विश्वास रखा और शी गिवन अस द टाइम थैंक यू सो मच मैम and I'm sure if somebody have any query please you may ask anybody from left side query तो आनी चाहिए नहीं तो फिर वो तालियां नहीं बजेंगी मैम बोलेंगी कि मुझे अच्छा नहीं लगता है I think the song was therapeutic, right? That did it for everybody. yes Yes. I think that question, kabhi to nazar milao, somebody might want to ask. We are too shy to ask, I guess. See, the audience is laughing, so I got the question. Ma'am, would you like to answer this? Yes. If your audience wanted to say that, since I'm an anchor and I share the same energy like you said, you love the audience. So if an audience puts an awkward question, how do you deal with that? That's awkward. Well, Kabhi To Nazar Milao, I think eyes are a window to the soul. So I do speak to people when I do. I connect with them by looking into his eyes or making the eye contact. Because that kind of establishes a rapport, which for my field of psychology is very important. And moreover, it is body language wise, it is also a sign of confidence. So a person who has low self-esteem, who is not comfortable with themselves in their own skin, generally doesn't make eye contact. So that's a very scientific, sorry, I went into a bit of a nerdy explanation to it. But romantically तो बहुत उसके ऊपर तो बहुत चर्चा, बहुत सारी poetry, बहुत सारे मतलब songs बने हैं. So of course, So we'll it's a leave it beautiful at thing. Kavita 3 Nazar dots, Milao. we'll let Yes. it continue. Yes, the TBD. show must go on. I'll ask a question. Please, Yes. not an awkward one, I hope. I have done that job, now we This can is- take the This is question. a thoughtful question. You see, you said you wanted to become a doctor, and things started happening to you in different field. Now, maybe 2 decades back, this happened to you, maybe 2.5, 25 years back. Now, today, has that stopped, or you have got definite route that now you will move on this path only? And you have Well, done psychology, master in Yes, psychology. Yes. Well, see, I make a plan. I believe in goal setting, but I keep it fluid to understand that life sometimes happens to us. Like, for example, nobody thought COVID is going to happen. For 2 years, everything came to a standstill. During that time, how do you still have a thriving mindset is something that I mastered, and I used my psychology to help people, corporates. I worked extensively with transgender community, but when COVID stopped and events started happening, I have managed a balance between the two. Because like I said, I mean, I don't know if you heard it in one of the interviews, that both the fields depend on me. So suppose I have something, if I have my child's parent-teacher meeting, I would then request Mr. Ashish not to have this thing if it is possible, or I would politely decline. So luckily for me, now I have managed to master time in that sense, I to don't that know. extent. I got a strong feeling that still you will get digression. You want digression, because this is the life. You said it. Well, if This is life. Christopher Nolan comes to me and says he wants to We wants me think to that act, we I are. will go to Hollywood. We think that we have done, but we have never done, because he is the person I'm not who saying decides. I'm done. Like I said, I have 10 No, as degrees. far as psychology is concerned. No, Thank there's you, lots thank more. you, Thank thank you. you. Thank you. any other query yes somebody was asking yeah We'll pass on the mic to sir. I can Mike, hear you, please yes. Mike I'm practicing as a psychologist, yes.
as you have done medicine, so you are practicing as a medicine or not right now? Not as a medical doctor, as a psychologist. Okay, thank you so much. He's from Apollo Spectra, so that's the reason he must be asking. Yeah, that's why Apollo Spectra and Cradle actually. And you have done gynaes, that's why I was asking. Yeah, no, I don't You can be practice. a brand ambassador for Cradle, right? A happy sign, let me add to that. Let me know if you have a job for me. No, we would like to hire you for brand ambassador for Cradle, if you would like. Done deal. That's the best part about being a freelancer, right? You're free Absolutely, to choose. absolutely. Yes, any We further queries? More questions? Fine. Ma'am Karina, what do you say about her? We are actually inspired. Let's share a microphone. It's okay. I'm quite loud. As I was listening to you, sister, I could feel that your mind is very, very open. You know, you're so welcoming to life. And that is why these all things happened with you. You know, it's not necessary what you have done will always help you in life. But what you do is helping so many others. So I think life has just got so much unlimited to offer. It's up to us how much we are able to take in. Still we are focused. We are still focused because whatever you are doing, sister, as a psychologist or as an actor, whatever, whenever you're doing, you're focused. And that's your beauty. Thank you. Thank you so much. So just a small response to what you just said is that we women, especially now I'm addressing this to the women in this hall, is that we pride ourselves in being multitaskers. मतलब वो दुर्गा के जैसे इतने सारे हाथ लेके ये भी करूँगी वो भी करूँगी झांसी की रानी बनूँगी. However, science has proved that being a multitasker is extremely bad for you. Because you feel that you're doing two jobs, but what is happening is your brain is constantly switching from one to the other. As a result, you're not as productive. So what my request to everybody here is, don't think multitasking is good. Please monotask. Do one job at a time, for which, like I said earlier on, that being in the moment is very, very important. And a little sharing with you, sister, is that I am a Vipassana follower. For last 14 years, I go to Gorai Center and I do 10 days of retreats there, and I do practice meditation every day because I truly believe that you have to disconnect to connect. Any more questions? I thought water bottle. So there are few common between Ma'am Dr. Aditi, Sister Karina and me is that we are following meditation. We are Vipassana followers, and obviously Sister BK is on a different level altogether. Raj Yoga. And I'm sure that most of us are doing the meditations for making our mind healthy. Even when the mind is healthy, we all are healthy. So I think if there are any query from audience side, we are ready to welcome. Yes, Dr. Bagish Saraswat, please. Okay. So when I said multitasking, मैंने सब साथ में नहीं किया. मैंने medicine पूरा किया, modeling किया, psychology किया. तो जब मैं पढ़ती हूँ, that time I'm only reading. तब मैं बैठ के
फ़ोन पे बात करके पढ़ रही हूँ, ऐसे नहीं है, उसको मैं मल्टीटास्किंग कहती हूँ. नॉट प्रोफेशन. एक मिनट में, एक मोमेंट में जो आप कर रहे हो वो ही करिए. अगर मैं काउंसलिंग सेशन कर रही हूँ तो मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि मुझे इसके बाद कहाँ जाना है. आई एम एक्चुअली लिसनिंग टू एवरी सिंगल वर्ड व्हाट इज़ सेड एंड नॉट सेड. बिकॉज ह्यूमन बींग्स हम जो है बात एक करते हैं पर कई बार योर बॉडी लैंग्वेज सेज समथिंग एल्स, राइट? तो वो भी एज अ साइकोलॉजिस्ट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि ये बंदा या बंदी जो मुझे बता रहा है वही है या ये और कुछ कहना चाह रही है जो मुझे नहीं कह पा रही है इस मोमेंट में. सो इफ़ आई कैन कैच दैट देन आई एम ऑफ ट्रू हेल्प टू दैट पर्सन. और वो तभी होगा when I am in the moment. If my mind is distracted, I will miss out on the micro expressions and the body language. उसे मैं monotasking कहती हूँ, ना कि I will still become something else. I might tomorrow, like I said, might go to Hollywood. Who knows? I might start, my beauty pageant thing can become a legacy business. Who knows? But that doesn't mean I'm multitasking. I'm doing one task in that moment. That's what I meant by monotasking. Very wonderful reply, and it's actually point to point, and we all accept this, ma'am. Thanks. Any further query, or we shall move forward for the next award session? I think everybody is waiting for awards. They're like, bas ho gaya ab. हाँ जी. Hello. Does sir want to ask a question, or do we have time to take? Oh, Hello. Contented at this moment when you're talking to Mr. Vats and communicating with us. Are you contented? No, I'm not content. So what are the dissatisfactions? I'm not discontent either. So there's a nuanced, this is a nuanced answer if you get it. I am not discontent, but I'm not content either because I have so much to do still. Yes, sir. हॅलो. डॉक्टर, तुम्ही आहार तज्ज्ञही आहात आणि मानसोपचार तज्ज्ञसुद्धा म्हणून तुम्ही काम पाहत आहेत. तर आहाराचा अच्छा Sir, Hindi or English? Yeah. मैडम, आप आहार तज्ञ हो. मैं आहार तज्ञ नहीं हूँ. I'm not a nutritionist. आप नहीं हो. I'm a psychologist and a medical doctor. ओके ओके. But वो है मेरे लिस्ट पे. अच्छा अच्छा, तो मुझे यही पूछना था कि खाने का यानी आप जो आहार लेते हैं उसका और साइकोलॉजी का कैसा संबंध जोड़ा जा सकता है? That's an excellent question. That is an excellent question. So I say when I do my sessions and all, group sessions, that you are what you think and you are what you eat. Very, very important to understand. हम कौन है as human beings? What are we? Who are we? We are a sum total of our memories, of our thoughts, and our body is what we eat. अगर आप हैवी, अगर मैंने जैसे देखा बाहर जो लंच है उसमें अगर आपने भर भर के 2-4 नान खाए, बिरयानी खाई, दाल चिकन खाया और यहाँ पे आपको बिठाया गया, नो मैटर हाउ इंटरेस्टिंग आई एम और सिस्टर इज, यू विल स्टिल बी डूइंग दिस, राइट? It's very difficult to pay attention. Very difficult. Why? Because it's the food that you've consumed. As opposed to if you've eaten salad and soup or something healthy and light, you will still be focused because your mind will be able to focus on me. That is the impact of food that one has. And of course, this is the temple that we live in, right? So you've got to pay attention to what you're eating because really, I mean, the damage that we, and I can go on, that we do to our bodies because of what food we consume has a very long-lasting impact on your physical body as well as on your mind. So Alzheimer's disease, Parkinson's, all the dementias, they are very heavily linked to the food we are eating. Research is going on, they have not been able to pinpoint, but it is a fact that eating packaged food with preservatives and all is leading to ADHD in children and many, many other mental disorders. Thank you very much. Thank you. So done. Thank you so much, Ma'am Thank you. Dr. Aditi, for your wonderful question answer sessions also. And again, a big round of applause for her. Thank you. And at last, may I request my colleague Pratibha, Pratibha, are you listening here, Pratibha, to come on the stage and give a flower bouquet to her. She's your fan. Huge round of applause.
Let's show some more energy. I think with this, we are done with the coffee with ma'am. And this session is done. And now let's move forward for the next important session. I'm handing over the mic and the entire thing to Dr. Govitrikar and Shanti Banerjee. Thank you so much. Thank you so much. So would you not be on the stage to felicitate the ones who are getting the awards? So now the moment has come. This is of course the 6th edition of Brands Council's ratings, conclave and awards. Like sir mentioned, the conclave part is done. The coffee part is also done, like you all can see, and we've heard a lot about how to bring back the energy. So let's keep the energies high while we get into the award segment. So a huge round of applause for all the nominees and of course the winners who will come on stage. My name is Shanti Banerjee and it has been an absolute pleasure not only hosting this but also to be able to learn and take back so much of knowledge with me, because I am a fitness and a yoga enthusiast myself, and I feel that, you know, if you did not actually sleep through any of the sessions, this is going to be a milestone event for all of you all. And now proceeding to the awards part, what we are all excited about. So let me mention the first category of awards for which I will be calling out the names. So the first category, National Startup Global Awards 2023, has been brought to you by Global Forum for Science, Technology, Infrastructure, Industry Affairs. The short form of that is GFSTIIA. A huge round of applause for this initiative. So the first award will go to, I'll mention the category first and the winner then, Most Trusted Academy of the Year. Any guesses? Okay, let me mention the name of the first award that is going to Most Trusted Academy of the Year, and that is Bal Gangadhara Kala Academy. Huge round of applause for the winner. Huge round of applause, congratulations. And of course, calls for a photo op. Like we know, time is precious. We will be moving on to the next one. Emerging Entrepreneur of the Year goes to Akhil Sharma. Can we have Akhil Sharma? Congratulations. Huge round of applause. Thank you so much. Next award, Startup Motivational Concept Award, goes to Techis Solutions Private Limited. Tech Test Solutions Private Limited, winner of Startup Motivational Awards. Congratulations to all our winners. Top 50 Impactful Emerging Startup Award, RKPC Innovation Building Technology Private Limited is the winner. Huge round of applause. Calls for a perfect photo op. Next, Best Advertising Company Award goes to Signworld. Sir is from Signworld.
Huge round of applause to all our winners. Congratulations once again. Next award, Startup Motivational Concept Award, goes to Dale Vihar Trips Private Limited. Congratulations. Huge round of applause. Special moments getting captured as memories and of course for social media. Moving on to the next set of awards brought to you by Brands Council. It's the Education Awards. These are the International Awards for Educational Excellence 2023. So let me announce the first category, Inspiring Teacher of the Year. That goes to Dr. Shruti Sahani. Shruti ma'am, I hope I've got your name correct. Stuti, okay. Dr. Stuti Sahani. Congratulations once again. Moving on, Best IT Educational Institution of the Year goes to Clean Code. Congratulations to all our winners. Huge round of applause. Next one, Best Hotel Management Institute in West Bengal. My home state goes to Indian Institute of Hotel Management. Huge round of applause. Do we have anybody to collect this award? Seems like I should take it back to my home state. Okay, we'll move on to the next category. Inspiring Teacher of the Year, once again, Dr. Hiran Das Mahar. Sir is here with us. Huge round of applause to encourage all the participants and the winners here. It's a special moment for everybody. Congratulations. Moving on, Best Principal of the Year, the award goes to Dr. Geeta K. Jairaj. Moving on, Inspiring Teacher of the Year goes to Dr. Vaibhav Uniyal. I think we have to proceed. Education Personality in Focus, Mrs. Sushma Dubey. Mrs. Sushma Dubey. Education Personality in Focus. Congratulations. Moving on. Best Training and Skill Development Institute of the Year goes to Smart Institute of Advanced Technology, Kota. Moving ahead, Top 10 Inspiring Teachers of the Year. The first award goes to Miss Ritu Kashyap. Huge round of applause. Finally, we have the winner right with us here. It's reminding me of my school days, I can say, where only students would get awards. Congratulations. It's always great to see teachers receiving the same. Congratulations.
And we are not done yet. Top 10 Inspiring Teachers of the Year goes on. Professor Kinjal Manani, ma'am is there with us. Huge round of applause. Congratulations. Moving on, Education Personality in Focus, Mr. Chintan Shankar Patel. Huge round of applause. Next award, Most Promising Preschool Consultant in India, Wonder Learning India Private Limited. Do we have anybody from the team? Next then, Best Infrastructure in Early Education, British International School, Jaipur. Huge round of applause for Sir to collect this award. Congratulations. Moving on, Education Personality in Focus, Dr. Monica Sharma. Huge round of applause. Congratulations. Moving on, Education Personality in Focus, Dr. Nikita Kulkarni. Congratulations. And the last award in this category, Best Institute of the Year, goes to Shivaji Rao S. Jondle College of Engineering and Technology. Do we have any representation? Okay, so let's move on to the next category. Medalinks India brings to you South Asia Pacific Healthcare Summit and Business Awards 2023. And the first award goes to Most Trusted Diagnostic Center. Saraf's Diagnostic Center. I think sir and ma'am, both of them are there. Huge round of applause. Congratulations. Moving on, Emerging Brand of Asia, Sensorise Solutions Private Limited. Huge round of applause. Next one is quite an interesting category, Best Meditation Trainer, and that is Dr. Deepak Suresh Harke. He was also on the panel. He told us a little about meditation, and of course, Sister Krina, we would love to welcome you on stage. Huge round of applause.
Moving on, Innovation in Fitness and Healthcare 2023, and the award goes to Mr. Adarsh Somani. His colleagues are here who were a part of the panel also to collect the award. Huge round of applause. Congratulations. Moving on, most promising outsourcing pharma company in CRAMS goes to Aquarius Global Industries Private Limited. Huge round of applause. It's a special moment for every winner, so I think we should make them feel special. Congratulations. Next, Emerging Pharma Company of the Year goes to Flawless Pharma Private Limited. Huge round of applause. Like I said, it is a special moment for every winner, so you might as well want to make them feel special, your colleagues from the industry. Congratulations. The last one from this category, I think we are switching categories here, pardon me. Now we are going to the last category of awards, Brands Council Ratings World's Best Brands and Business Awards 2023. Are you ready for this? Let's have a huge round of applause for these two personalities who have been doing this all through, and we have come to the last category of awards. Thank you for the enthusiasm. Award for the best returns to the investor goes to, any guesses? Remedium Life Care Limited. Congratulations. Moving on, Best Managed Pharmaceutical Sustainable Organizations 2023 goes to Medec Dragon Private Limited. Congratulations, huge round of applause. Next award goes to Visionary Entrepreneur of the Year, and that is Dr. Deepak Shinoy. Is he there in the house? Huge round of applause. Congratulations. Moving on, Socially Responsible Pharma Company of the Year, CSR, goes to Rupus Global Limited. Congratulations. Next award, Emerging Pharma Exporter of the Year, goes to Cyabaltic Remedies Private Limited. Do we have anybody? Let's move on.
25 India's most inspiring CEOs. And one of them is Mr. John Yesudas. Not there. Okay. Best Customer Service Icon Award goes to Mr. Ramesh Shamaru Bortuk. Huge round of applause. Let me repeat his name once again, finally, that he is here. Mr. Ramesh Shamrao Bortuke. So he's the one who has won the Best Customer Service Icon Award. Congratulations. Moving on, 25 India's most trusted companies of the year. The winner is Alok Infotech. Huge round of applause. One more, 25 India's most trusted companies of the year, Welspun Flooring Limited. Do we have representation from Welspun? Yes. Huge round of applause. Congratulations. Moving forward, Icon of the Year, it's a personality. The person we saw on the ramp also, on the stage earlier. I think I have got into the fashion mode right now. Okay, so may I request retired Lieutenant Colonel Jaswinder Singh Sondhi to please come back on stage. Huge round of applause. Congratulations. Moving on, Emerging Company of the Year goes to Somaya Transactions Logistics Limited. Somaya Transactions Logistics Limited. That's Emerging Company of the Year award. Congratulations. The Young Business Leader of the Year award goes to Mr. Kunal Kantilal Samsuka. Congratulations. Huge round of applause. Asia's most trusted brand goes to Banglamark Limited. Fastest growing multi-speciality hospitality of the year goes to Apollo Cradle and Spectra Hospitals, Greater Noida. Huge round of applause. Congratulations. Next, Emerging Film Producer 2023 Short Films goes to Salman Saad Khan Production.
Congratulations. Moving on, most trusted emerging plastic plating company goes to Ishi Plastics. Congratulations. So we have some virtual awards, virtual editions. Should we proceed with those? Yeah, so we'll follow the same flow. Okay. No, I think they said virtual edition, but nevertheless, let me just go ahead with this. Yes. Best Tech Startup of the Year Manufacturing. I think they have a virtual edition, probably that's what it meant. Unique Fernandez. That's quite a unique name, is the person here. Unique Frames. Do we have anybody representing Unique Frames? Okay, moving on. Excellence in Leadership in Education. Ms. Priyansha Walia. Ms. Priyansha Walia. Moving on, Excellence in Leadership in Education, Atiya Bukharia. Bukhari. Excellence in Leadership in Education, Atiya Bukhari. Is she there? Okay. Yeah, I'm sure this is very last minute because, I can see scribbles of handwriting here. So pardon me if I got anybody's name incorrect in the process. Best Community Policing Initiatives of Delhi Police. Best Community Policing Initiatives of Delhi Police goes to none other than, of course, Delhi Police Public Library. So if we have somebody to collect this, no? Okay, no problem. We are expecting them. Okay. Top 100 Impactful Emerging Business Leaders goes to Dr. Sanjay Joshi. Huge round of applause. The next award goes to iconic singer and music director Sudhakar Sneh. The correct time he made an entry. And of course, he has been on the stage since morning and entertained us. Huge round of applause. Totally well deserved. Congratulations once again. Moving on, Best Homeopathy Company of the Year goes to Dr. CGO India Healthcare. Sir is there, okay. We were almost doing a marathon in between. Congratulations, and let's show some energy back to our winners. Congratulations. Moving on, top 50 pharmacy faculty of the year goes to Dr. Shri Bhavani. Okay, let's move on. Emerging Healthcare Company of the Year, Twin City Clinic, Vapi, India.
sir is collecting the award. Yes. Huge round of applause. I'll just repeat that. It's Emerging Healthcare Category of the Year, Twin City Clinic, Vapi, India. Yeah, yeah. Congratulations. Moving on, Best Medical Imaging Company of the Year goes to Carestream Health India Private Limited. I think sir is coming. Yeah. Huge round of applause for the winners who are present here. It's a special moment for them. Let's make them feel a little more special. This is an interesting category. Kathak Personality of the Year, Mrs. Durgeshwari Saraswat. Huge round of applause. Is ma'am going to perform for us? We've made all our guests do that earlier in the day, and the show must go on. So maybe post the awards, we can look forward to it. Upcoming Singer of the Year in the spiritual category is Shashikant ji here. Oh, okay. Huge round of applause for Shashikant Rajaram Mishra ji. Congratulations. We are almost towards the end of the awards. Emerging Startup of the Year goes to Tathava Technology Solutions Private Limited. Emerging Startup of the Year 2023 goes to Tathavam Technology Solutions Private Limited. Huge round of applause. And the last award goes to Inspiring Professor of the Year, Dr. Simanchal Panda. Is sir there? Congratulations. And now we'll go back to the Delhi Police Category Award that we have, and I will request for a minute to find it in the sequence where it was. But may I request them to please come up on stage as I am taking a look. Where was that? Okay, let me mention the category first. Best Community Policing Initiatives of Delhi Police Public Library. Huge round of applause. And it's a great initiative. Even I would like to support this myself. Like we all discussed, you should be healthy and happy and safe as well. So thank you so much to making sure the police force in Delhi and of course Mumbai, like we know, to making sure that we are all safe here. And that brings us to the end of the awards category. Huge round of applause
to all of you all for being present here and witnessing, and of course, the diva herself for taking time out to present the awards. And I think Sister Krina wants to felicitate. Dr. Deepak and Sister Krina. Awards, may I request Shri Gopi Kishan Babunaji to please come on the stage. Mr. Gopi Kishan Babunaji is a renowned chartered accountant of Mumbai, और मुंबई के इंडस्ट्रियलिस्ट के भाई खाते इन्हीं के पास हैं, तो एक बार जोरदार तालियां. May I request Mr. Sudhakar Sneh to please come on the stage. And may I request Alpna Bhardwaj to please come on the stage. And may I request Alpna Bhardwaj and Dr. Aditi Govitrikar to please give a token of love to Sayanti Banerjee. Famous film actress Meera Bharti is also with us. Can I request Meera Bharti to please come on stage? I
think with this we are calling the award session come to an end. And I really thankful to Dr. Aditi and all of you for participation in this award. We have two singers with us. One is Mr. Sudhakar Isne and one is Shashikant Mishra ji. So Shashikant Mishra ji, can I see? मैं आपको देख पा रहा हूँ. हाँ, एक जरा छोटा सा गाना हो जाए जरा, तो हम लोग थोड़ा और let's have भक्ति में गाना होगा, वो मुझे पता है. Let's आ जाइए. Thanks, Dr. Aditi. Ladies and gentlemen, एक बार जोरदार ताली डॉक्टर अदिति के लिए. हेलो 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 ये वो ट्रैक प्ले करिए. हेलो हेलो ये इफेक्टेड. हेलो 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 मैं आपको एक उदित नारायण का ट्रैक सुनाऊंगा, जिसको हम लोग उदित जी के साथ बहुत सारे स्टेज परफॉर्म किए हैं, तो उन्हीं का एक ट्रैक्स मैं आपको. हेलो 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 हे हे ओ हो आहा हा हा. आगे आगे चाहत चली, पीछे पीछे दिल चल पड़ा. कैसे भला रोकूं इसे, ये तो है दीवाना बड़ा. बेखुदी जाने ना, कुछ कहा माने ना, हर धड़कन कहे ये जादू है प्यार का. आगे आगे चाहत चली, पीछे पीछे दिल चल पड़ा. जाने ये कैसा नाता है मन का, बिन डोर के बांधे हैं. हो रब से दुआ में सांझ सवेरे महबूब को मांगे हैं. कह रहा है सफर आएगी वो नजर, गुजर जाएगा लम्हा इंतजार का. आगे आगे चाहत चली, पीछे पीछे दिल चल पड़ा. कैसे भला रोकूं इसे, ये तो है दीवाना बड़ा. दीवानगी का आलम न देखो, कैसा नशा छाया है. हो आवारगी का मौसम तो देखो, खुशबू हिज़ां लाया है. कह रहा है सफर आएगी वो नजर, गुजर जाएगा लम्हा इंतजार का. आगे आगे चाहत चली, पीछे पीछे दिल चल पड़ा. कैसे भला रोकूं इसे,
ये तो है दीवाना बड़ा। ला 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 ला। और एक छोटी सी कविता, अभी हमारे बागीश भैया ने कहा कि प्रेमियों के लिए उन्होंने बहुत प्यारी कविता हम लोग को, भैया का आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहता है। भैया कई मंचों पे हम लोग को आशीर्वाद देते रहते हैं। तो एक छोटी सी कविता मैं आपको और सुना रहा हूँ। और इसी हमारे यहाँ आजकल प्रेम का जो परिभाषा है वो काफ़ी बदला हुआ है। पहले प्रेम होता था भैया लैला मजनू के ज़माने में, सोनी महिवाल के ज़माने में, या श्री फरहाद के ज़माने में। तो ये प्रेमी अमर हो गए लेकिन एक दूसरे से कभी मिल नहीं पाए। अगर लैला यहाँ तड़पती रहे तो मजनू रेगिस्तान में तड़पते रहे, सोनी महिवाल आपस में कभी मिल नहीं पाए। तो ये आजकल का जो नया प्रेम का ट्रेंड है, मैं उसी पे 2 लाइन एक कविता सुनाऊंगा, फिर उसके बाद अपने वाणी को विराम दूंगा। प्यार है तो जमाने का डर छोड़ दो, प्यार है तो जमाने का डर छोड़ दो। हम भी घर छोड़ दें, तुम भी घर छोड़ दो, प्यार है तो जमाने का डर छोड़ दो। बिन बगावत किए कोई चारा नहीं, हम ही अपने हैं कोई हमारा नहीं। बोझ रिश्तों का उठता नहीं अब, है किसी का भी कोई सहारा नहीं। इस कहानी में पन्ना नया जोड़ दो, इस कहानी में पन्ना नया जोड़ दो। तुम भी घर छोड़ दो, हम भी घर छोड़ दें, प्यार है तो जमाने का डर छोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, जिसके लिए बहुत बहुत आभार मैं इस संस्था का करता हूँ। खूब समा बांध दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जोरदार तालियां। एक और हमारे पास एक रत्न है, उनका नाम है सुधाकर स्नेह। हमने सुबह भी उनको सुना, हम फिलहाल दोबारा उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब की बार आध्यात्मिक ना सुनाएं और जूते पहन के आएँ। और आपने बड़े बड़े सिंगर्स के साथ और फिल्मों में काम किया है, आप प्लीज़ आइए। आपका अभी एक यूपी एंथम बना हुआ है, यूपी एंथम बनाया है सरकार ने, और मोदी जी ने उसको लॉन्च किया था। वो यूपी एंथम सुधाकर स्नेह का है, आप चाहो तो गूगल कर लीजिए, उन्होंने बनाया है। एक बार फिर जोरदार स्वागत। हेलो, आदेश हुआ है आध्यात्मिक न सुनाए। अब मुश्किल ये है कि संगीत स्वयं में आध्यात्म ही है। तो अभी जो सिनेमा का संगीत हम देखते हैं मुश्किल से कितने सालों का है, बहुत, अगर जोड़ घटाव भी करेंगे देश विदेश के, दुनिया का भी, वर्ल्ड सिनेमा की भी बात करेंगे तो 100-125 साल के इर्द गिर्द ही निपट जाएगा सिनेमा का संगीत। लेकिन संगीत तो शाश्वत है। चारों वेदों को निचोड़ने के बाद जो रस निकला, पांचवा वेद, वो संगीत है जो हमें संग संग जीना सिखाती है। अभी हमने इतनी चर्चा की स्वास्थ्य के बारे में, सारी एडुकेशन के बारे में, सर्वस्व है संगीत में। बहरहाल अभी उत्साह दूसरा है, और जिस तरीके से अब मुलाकात आज मोहतरमा से हुई है, आज इन्होंने मुझे पुरस्कृत किया, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है
कि मैं कुछ नज्र करूं। थोड़ा सा भैया रिवर्ब मुझे अगर फीडबैक में मिल जाए, ओनली रिवर्ब। वो एक शेर है कि आपको देखकर देखता रह गया, लेकिन गाना मैं ये नहीं गा रहा हूं कि तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तौबा ये मत वाली चाल। अच्छा, इस वक्त क्या है हमारे लिए, संगीत में कहते हैं सुर के साथ लय, लय ही है, जीवन भी लय है। बहुत सारी बातें हैं कहने सुनने के लिए, लेकिन इस वक्त लय आपको देना पड़ेगा। हमारे साजिंदे भी आप हैं, हमारा कोरस भी आप हैं, हमारी ऑडियंस भी आप हैं, हमारे रिदम भी आप हैं। आपसे जो लय मिलेगा मैं उसी लय में अपने आप को समाहित कर लूँगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि आदत है हम लोगों को थोड़ा अपने बैंड के साथ। तो इस समय आप तमाम हमारे लिए बैंड हैं। अब मेरा बैंड बजाइए, मेरे साथ बैंड बजाइए। जी। तो तौबा ये मत वाली चाल, ये बात। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल हसीना, तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल हसीना, तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल। शुक्रिया। सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं, क़यामत है क्या तेरी अंगड़ाइयाँ हैं। सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं, क़यामत है क्या तेरी अंगड़ाइयाँ हैं। बहारे चमन हो घटाएं घनक हो, बहारे चमन हो घटाएं घनक हो। ये सब तेरी सूरत की परछाइयाँ है कि तन से उड़ता गुलाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल हसीना, तेरी मिसाल कहाँ। क्या बात है, बढ़िया स्केल बदला आपने। आपके स्केल में अब गाता हूं। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे। तो ये कहते हैं सुर से सुर का मिल जाना, मिले सुर मेरा तुम्हारा। तौबा, फिर से वही सुनिए। तौबा तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल हसीना, तेरी मिसाल कहाँ। ये पुराने गीत हैं जो बगैर साज और साजिंदे के भी गाया जा सकता है। मैं आज का भी संगीत से उतना ही जुड़ा हूँ, लेकिन साउंड के चक्कर में हम अपनी मूल आत्मा से कहीं ना कहीं मूल जो मेलोडी है उससे भटक जाते हैं कभी कभी। तो खैर, शायरी का आनंद लीजिए कि हूँ मैं भी दीवानों का एक शाहजादा, हूँ मैं भी दीवानों का एक शाहजादा। तुझे देख कर खो गया कुछ ज्यादा। खुदा के लिए मत बुरा मान जाना, खुदा के लिए मत बुरा मान जाना। ये लब छू लिए हैं यूं ही बेइरादे नशे में,
इतना ख्याल कहाँ, तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल हसीना, तेरी मिसाल कहाँ, तौबा ये मत वाली चाल। जय हो। पानी की बोतल मिल सकती है क्या? बहुत शुक्रिया। देखिए, कबीर की एक रचना है, मन लागो मेरो यार फकीरी में। इस रचना को कई लोगों ने अपने अपने तरीके से गाया है। जी, तो थोड़ा सा अपने हाथों को एक बार खोल लीजिए, क्योंकि आपको अभी अभी मैडम ने कहा था कि कलाकारों को थोड़ा तालियां अच्छी लगती है, तो वो हम पे भी लागू होता है। ये हक हमें भी हासिल है। तो रचना है कि मन लागो मेरो यार फकीरी में, और फकीरी से बड़ी कोई अमीरी नहीं है। जिसको फकीरी आ जाए उससे बड़ी अमीरी आ नहीं सकती। सारी दुनिया वहां समाहित है, सर्वस्व है फकीरी में। फकीर तभी हो सकता है जब उसने बहुत अमीरी पाली हो। जी, के मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, 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 मन लागो में। क्या बात है। हमारे लिए विनोद दुबे जी का अभी अभी आगमन हुआ है। स्वागत है विनोद दुबे जी। बहुत बड़े गीतकार, बहुत बड़े गायक। अभी अभी गुलाबो सिताबो फिल्म इनकी बहुत मकबूल हुई है, उस फिल्म में इनका गाना, और हमारे बीच अभी आए हैं। आपका स्वागत है। कि मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनियाई सबूरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा। चारों दिशाओं जागिरी में, जागिरी में। के मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीर में। मन लागो मेरो यार फकीर में। जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सुधाकर स्नेह जी। आपकी आवाज़ में जादू है और हम सब आपकी आवाज़
के मतलब कायल है। अभी एक स्पेशल अनाउंसमेंट है हमारे, आज तो ये सितारों की महफिल है, आप सभी सितारे हैं। अभी विनोद दुबे जी जो कि एक फेमस म्यूजिशियन और कंपोज़र और लिरिसिस्ट हैं, वो हमारे बीच में, जिन्होंने गुलाबों सिताबों फिल्म में काम किया था और म्यूज़िक दिया है। और अदिति गोवित्रिकर जी है। क्या मैं एक बार अदिति गोवित्री जी को स्टेज पे बुला सकता हूँ? और विनोद दुबे जी, क्या आप 2 मिनट के लिए आप स्टेज पे आकर आए, तो हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। Perfect photo op. Congratulations. अभी इसी विनोद जी हमें एक बहुत तड़कता भड़कता गाना सुनाएंगे और डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर अब विदा लेना चाहती हैं और ये मुझे पकड़ कोई मैं एक मेरा गीत है, फिलहाल मेरे पास म्यूजिशियन नहीं है। कितने लोग हैं जो इस वक्त जिए पा रहे हैं? सब या तो पीछे चले जाते हैं या फ्यूचर की सोचने लगते हैं। मेरा एक गीत है, अर्पण है आप लोगों को। इस पल भी नहीं जीते हैं उस पल के लिए, इस पल भी नहीं जीते हैं उस पल के लिए। जाने क्यों आज परेशान हैं हम कल के लिए, इस पल भी नहीं जीते हैं उस पल के लिए। हंस लो इस पल, नहीं ये पल भी बीत जाएगा। हंस लो इस पल, नहीं ये पल भी बीत जाएगा। जीना एक पल भी बहुत है जिंदगी के लिए। जाने क्यों आज परेशान हैं हम कल के लिए, इस पल भी नहीं जीते हैं उस पल के लिए। बीता हुआ पल जाकर फिर न आएगा, बीता हुआ पल जाकर फिर न आएगा। लुटा दो चाहे सारी दौलत उस पल के लिए। जाने क्यों आज परेशान हैं हम कल के लिए, इस पल भी नहीं जीते हैं उस पल के लिए। ये दो अंतरे वागीश जी को कि सभी हैं जीते हर पल बस अपनी खातिर, सभी हैं जीते हर पल बस अपनी खातिर। जी के देखो जरा एक पल भी औरों के लिए। जाने क्यों आज
परेशान हैं हम कल के लिए, इस पल भी नहीं जीते हैं उस पल के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और अभी इसी के साथ डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर एक दो लाइन। कोई गम हो, आँख नम हो, तो चुप ना रहो, खुद में छुप ना रहो, से हलो, से हलो, से हलो, someone you know, someone you know। कोई गम हो, आँख नम हो, वक्त है गर बुरा ये भी कट जाएगा, है अंधेरा घना ये भी छट जाएगा, फलसफाए जिंदगी देखो रुकना नहीं, फलसफाए जिंदगी देखो रुकना नहीं, धार नदी आकी बन बस बहते रहो, से हलो, से हलो, से हलो, someone you know, someone you know। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां। और डॉक्टर अदिति गोवित्री, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स हैव अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर अदिति गोवित्रिकर। हैंडिंग ओवर टू यू। That was an amazing song. It really touched my heart. Thank you so much. They were trying to tell us how to be happy, how to be healthy, and how to live a good life. So, as an anchor, I have also sat as an audience today and learnt a lot. So, I have to thank my beautiful audience who have made it so special for me. The 6th edition of Brands Council Ratings, Conclave, and Awards. And we are not done yet. Let the show go on. Let the entertainment go on. Of course, Ashish Vats ji has gone to see off Aditi Govitrikar, जो हमारे chief guest थे. After that, he will give his vote of thanks to everybody. Till then, may I request Shashikant ji to please come back for a song. बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग, मुझे फिर सुनने की शक्ति आपके अंदर हो गई है। एक श्रावण चल रहा है और मैं चल रहा हूँ एक भोलेनाथ का भजन आपको सुनाने, तो मैं चाहता हूँ ये ट्रैक प्ले करिए, मैं सुना देता हूँ आपको। थोड़ा सा इसमें इफेक्ट कर दीजिए। थोड़ा सा स्टार्ट से प्ले करिए क्योंकि म्यूजिक नहीं आ रहा। थैंक यू सर। तन बोला रे मन बोला रे, मन बोला रे बम भोला रे। लिंग थाप विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, मोहि न दूजा, मोहि न दूजा। कालों के जो महाकाल है, नीलकंठ विष घोला रे। ओ भोला रे, ओ भोला रे, ओ
नारायणी देखते हैं, हर कंकड़ में शंकर देखते हैं। ये हमारा सनातन है। अंग बभूति बागंबर तन पे कर त्रिशूल डमरू सोहे। अंग बभूति बागंबर तन पे कर त्रिशूल डमरू सोहे। मुंड माल सिर गंग विराजे चंद्रमौलि मस्तक मोहे। अविनाशी काशी के वासी मस्त मलंग तेरा चोला रे। ओ भोला रे, ओ भोला रे, ओ भोला रे, ओ भोला रे। तन बोला रे, मन बोला रे, मन बोला रे, बम भोला। आदिदेव शिव शंकर शंभु आशुतोष औघड़दानी। आदि अनंत नाम जपते हैं गूढ़ मूढ़ योगी ज्ञानी। आदिदेव शिव शंकर शंभु आशुतोष औघड़दानी। हो आदिदेव शिव शंकर शंभु आशुतोष औघड़दानी। आदि अनंत नाम जपते हैं गूढ़ मूढ़ योगी ज्ञानी। तीन लोक को बांधा जिसने तीन लोक को खोला रे। ओ भोला रे, ओ भोला रे, ओ भोला रे, ओ भोला रे। तन बोला रे, मन बोला रे, मन बोला रे, बम भोला रे। लिंग थापि विधिवत कर पूजा शिव समान प्रिय मोहि दूजा, मोहि दूजा। कालों के जो महाकाल है नीलकंठ विष भोला रे। ओ भोला रे, ओ भोला रे, ओ भोला रे, ओ भोला रे। तन बोला रे, मन बोला रे, मन बोला रे, बम भोला रे। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी भैया हम लोग को इतना प्रेम करते हैं, कई मंचों से मिले हैं, और क्या है भीड़ भाड़ इतनी रहती है इसलिए आशीर्वाद दे नहीं पाते हैं। आज फुर्सत से आशीर्वाद ऐसा मिला है कि जबरदस्ती हम लोग आशीर्वाद ले सकते हैं। एकदम दीदी थोड़ा पीछे हो जाओ, नहीं तो फोटो खराब हो जाएगा। ये सामने की बेटा। थैंक यू, थैंक यू। यस प्लीज, वेट वन मोर। थैंक यू, थैंक यू।